Last time we started with the second chapter, that is data structure, right? And we have finished the basic concepts related to data structure, about arrays and about arrays we have done. We have two types of data structure, linear and non-linear. In linear, we have started with array, and we have one more, that is linked list, right? And then afterwards we will do non-linear data structure, that is tree. So we are doing with array concepts. So algorithms we have to do based on basic operations in data structure. So we have 6 operations, as we have already discussed. 6 operations. What are those 6 operations? Traversing, insertion, deletion, searching, sorting, and one more is merging. So we have 6 algorithms. One is traversing, insertion, deletion, and searching. We have 2 algorithms: linear searching and binary searching, and sorting we have bubble sorting algorithm. So today we will try to finish all the algorithm and small concepts related to pointer arrays and records. So today we will finish all these topic, and then we will start with non-linear structure tree in next class. So we have done one algorithm traversing with the while loop as well as for loop. So in traversing, what we have to see that we have to go to each and every element. We have to visit each and every element once, and we have to process. So here our array name is linear array LA. Okay, and I have taken one variable k, which is counter, which starts from LB. LB stands for lower bound, means the first address of array element. Then and it will go up to upper bound. So this is the condition that your counter will move from lower bound to upper bound. And you have to go to the each element. So that is linear array of kth element. What is that process? What was this process? Process is the operation which you need to perform on that array. It can be any addition, it can be any logical operation, anything you can perform. So that is processing. So here we have taken general term, that is process. So we have to apply process to each and every element. For that we need to move, or we need to visit each and every element. For that we have made the loop from lower bound to upper bound, and every element is linear array of kth. Since k is start for LB, so this is your first 0 position. So we have applied the process to first position. After that, we have implemented the counter. After implementing the counter, it is checking the counter whether it is less than or equals to upper bound. If this condition is true, then it will go to the next array element and process the same thing there also. Again, it is implemented, and again it will check by this condition. If it is still less than upper bound, then again it will do that processing. So it will keep on repeating till this condition is true. Once this will become false, when it will become false, when the k value is greater than upper bound. When the k value is greater than upper bound, you will automatically come out from the loop, and then you have processed each and every element. So this is about traversing. So that we have done with while loop. तो हमने ये भी देखा था कैसे हमें एल्गोरिथम लिखना है. ऑल वेरिएबल शुड बी इन कैपिटल, असाइनमेंट शुड बी कॉलन इक्वल्स टू से देना है. while loop कैसे लिखना है? रिपीट, you have to repeat, write the steps, how many steps you want to repeat, this one and this one to apply, repeat steps 3 and 4, and while में you have to put the condition. So initialization, condition and incremental steps are at different places in while loop. और सेम हमने किया था, same we did with the help of for loop. In for loop, what you have to write? Repeat for k is equals to lower bound to upper bound. So lower bound means your initial condition, and it will go up to upper bound means it is a test condition that k should be less than or equals to upper bound. And here you have to write the
the step. If it is incremented by 1, then you need not to write, it will by default incremented by 1. And then apply process to each and every kth element of linear array. So this you can write with this for loop also. So in this, that those three steps, initialization, condition, and incremental steps are there in single line. So k is equals to LB initialization, LB to UB is your condition, and step if it is incremented by 1, then you need not to specify that step. Understood? So very easy to write with the help of for loop. So understood the concept we have already done in last lecture also. This I'm revising because again we have to go with these algorithms only. So understood the traversing means visiting each and every element. That is our first algorithm. Now next we will have to start with second algorithm, that is based on insertion. That how to add new new array element in the existing array. You have, let's say you have elements of array elements of 5. You have 5 numbers in your array element. If you want to insert, then you can insert at any position, in the beginning, in the middle, or at the end. Anywhere you can add. And after adding, you have to update your list, that instead of 5 elements, now in your array you will be having 6 elements. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा, आपने कभी एक्सेल पे काम किया है, तो जैसे ही हम कोई रो इंसर्ट करते हैं या कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो उसमें बाकी के जो रोज हैं, न्यू स्टेप्स जो हैं, वो सब एक स्टेप नीचे चले जाते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट ऐड करेंगे, दैट टाइम all we need to move all the elements one step forward. So here you can see insertion means adding an element to existing elements of array. And here you can easily insert at the end. End में तो बहुत easily insert करना है. You go to the last position and easily add. But if it is in the middle, then you require to move all the existing element one byte forward, one memory location down. Okay, so that will be more clear. Then we will do this algorithm. So this is algorithm. I have taken all your from TPS only. तो variables भी मैंने सब TPS वाले ही लिए हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा easy हो जाएगा recollect करने में. So this is an insertion algorithm. तो मैंने last class में भी बताया था कि while writing algorithm, first you need to write one small paragraph about the purpose and how many variables you are going to use in your algorithm. So this is the purpose of your algorithm. Here insert linear array. LA is your name of the array. LA is the name of array and is total number of elements in your array. If you can see, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right now you have 7 elements in your array. Okay. K is the position. K is the position where you want to insert new element. Okay. And item is a variable जिसके कंटेंट आप यहाँ पर kth एलिमेंट में इंसर्ट करोगे. जैसे अभी ये लिस्ट है, तो आइटम लेट्स से 35, आइटम इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया 35 और kth पोजीशन ये है. दिस इज योर kth पोजीशन. तो हियर आई वांट टू इंसर्ट 35. So what will happen to these elements? So they need to move one step down. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? We will not start from here. If I move 30 to this place, so it will override 40. तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? लास्ट से. कि first we will transfer the last element here. Then this place will be like empty. Means we have copied. Data will be there. Then you can overwrite 60 over here. So here it will be 60. Okay. So this way, now this place, this we have copied. Now we can copy 50 here. Here we can copy 40 and
here we can copy 30. After moving all the array elements one location down or one location forward, then they at this place now we can add item. Understood? So this is the basic concept behind the insertion. कि insertion होता कैसे है? Insertion में you have given an array with n number of elements, okay? And kth is the position where you want to insert new element. And where is your new element? New element is stored in item. Okay? So to how the insertion done? इंसर्शन के लिए जहाँ पर भी इंसर्ट करना है वहाँ से लेकर उसके सारे के सारे नीचे के एलिमेंट यू हैव टू मूव वन स्टेप डाउन और वन स्टेप फॉरवर्ड. तो उसके लिए आप ऊपर से लूप स्टार्ट नहीं करेंगे. यू हैव टू स्टार्ट लूप फ्रॉम द लास्ट. ओके, यहाँ से आप लूप स्टार्ट करोगे. फर्स्ट यू transfer last element into new array, new location. Then 60 will transfer at this place, then 50 will come here, 40 will come here, 30 will come here. And now this place is free to transfer your item here. Understood? This is the concept behind this. तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लूप लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा. You have to initialize your counter from the last element. So that's why you can see I have set the counter. J is my counter here and I have initialized to the last element address. nth position मैंने उसको दिया है. ठीक है? तो अब ये जो पोजीशन है तो 70 कैसे मिलेगा? 70 you can get with the help of this word linear array of jth position. ठीक है? LA is the name. कैसे हम डेटा एक्सेस करते हैं? एरे में डेटा कैसे एक्सेस करते हैं? एरे का नाम और उसका पोजीशन. Understood? So this position is the value at this position you can access with the help of this linear array of jth element. So this where you will transfer. अगर ये j position है, अगर ये n है तो ये n+1 हुआ. ठीक है ना? This is your n+1. तो same this is also j+1 because हमने j और n को equalize किया. So this position is linear array of jth element. तो आपको क्या करना है? इसके कंटेंट इसको ट्रांसफर करने हैं. So in second step what are you doing? You are transferring the content of linear array of jth element to j+1. जब आपने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, now what we have to do? You have to go to that place, right? Understood? तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, sorry, you have to go to this place, 60th पे. तो j यहाँ आना चाहिए. This is your j and new j+1 will be this. Understood? So counter should be incremented or decremented? It should be decremented. तो काउंटर डिक्रीमेंट हुआ. तो ये दोनों स्टेप कब तक चलाने हैं? कि आपको अब ये वाला डेटा इधर प्लेस करेंगे तो ये हमारा लीनियर एरे ऑफ jth पोजीशन हो गया और ये पोजीशन हो गया लीनियर एरे ऑफ j+1. ओके, तो जब ये 60 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे तो माय न्यू j विल बी हियर. ओके, एंड न्यू j+1 विल बी हियर. ठीक है? तो व्हेन आई विल बी एबल टू ट्रांसफर 50 एट दिस प्लेस तो मुझे काउंटर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो मेरा न्यू काउंटर ये और न्यू j+1. ठीक है? तो ऐसे करते करते हमें कब तक जाना है? kth पोजीशन तक. तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? j should be greater than or equals to k. This you have to repeat step 3 and 4 till the value of j is greater than or equals to k. जैसे ही ये इससे बड़ी है, ये सब वैल्यूज बड़ी है ना, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7th पोजीशन है, डिक्रीमेंट होके 6 पे आया. अब मुझे इंसर्ट कहाँ करना है? 3rd पोजीशन पे. तो ये काउंटर कहाँ तक चलेगा? 7 is
less than or equals to greater than or equals to 3. अगर मैं 1 से start कर रही हूँ. Understood? So this loop will go till the condition that till the jth or the counter is greater than or equals to kth position. Understood the concept? I think this is clear. ठीक है. उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. मतलब जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो जे यहाँ आ जाएगा ना और ये कंडीशन फॉल्स. तो मतलब आप इस पोजीशन पे हो. When you are at this position, now what is your next step? You will be out of the loop because this condition is false now. Now what you have to do, you have to transfer the value, that item here. ठीक है. तो item you are transferring to linear array of kth position. Okay. And after transferring the new value, so now you have to update your list. Instead of 7 elements, now you will be having 8 elements. So in update करने के लिए you will have to write this step that earlier the total number of elements were n. Now it is n plus 1. Understood? Is it okay? If anybody is having doubt in this, you can ask. Very simple concept. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंसर्शन करने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स एक स्टेप नीचे ले जाने हैं और लास्ट वाला एलिमेंट पहले मूव करना है. तो लास्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन को आपको यहाँ ट्रांसफर करना है. दैट वी आर डूइंग हियर. एंड फिर आपको नेक्स्ट पे जाने के लिए काउंटर को डिक्रीमेंट करना है. और कब तक करना है? जब तक आप उस प्लेस पे नहीं पहुंच जाते जब तक जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है. और यहाँ इंसर्ट करते ही यू इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू गो विद दिस स्टेप एंड यू हैव टू अपडेट योर एरे लिस्ट. आई होप इट इज क्लियर. If you have any doubt, I can repeat or I can repeat any step if you want. Otherwise, I'll move to deletion algorithm. These are very easy. बस थोड़ा learn करने पड़ेंगे. इस पूरे chapter में algorithms के concept ही थोड़े से different हैं और थोड़ा steps आपको learn करना. Otherwise, there is no problem. ये step करना. Why decrement? Because you are starting from here. अगर आप लास्ट पोजीशन से शुरू कर रहे हो तो हाउ टू मूव हियर एट दिस पोजीशन? यू हैव टू डिक्रीमेंट द काउंटर. ना आप काउंटर रिवर्स में चला रहे हो, बड़े से छोटे में जा रहे हो. यू आर एट हाईएस्ट पोजीशन. नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लोअर पोजीशन. सो एवरी टाइम अभी n एलिमेंट 7 है. n की वैल्यू यहाँ पर 7 एलिमेंट्स है. तो जब आपने ये पार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा ना इसको मूव करने के लिए. तो आप 7th पोजीशन से किस पे जा रहे हो? यू आर गोइंग टू 6th पोजीशन. तो यू नीड टू डिक्रीमेंट द काउंटर. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई वी आर डिक्रीमेंटिंग द काउंटर. कब तक डिक्रीमेंट करना है? जब तक आप kth पोजीशन पे नहीं आ जाते जहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना है. वेयर यू नीड टू इंसर्ट डेटा. So the counter should be greater than or equals to 3. Clear? Any other doubt? Okay. So shall I move to the next algorithm? Deletion. So we'll start with deletion. Same जैसे insert किया था, same way we can remove element from the existing elements of array. तो deletion करने के बाद when you remove something from that, तो that place will be vacant. तो आपको क्या करना है? जो नीचे के जो एलिमेंट्स थे उस डिलीटेड आइटम के, उन सबको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है. लाइक दिस. यहाँ पर अगर मैं ये 30 को डिलीट करती हूँ तो दिस प्लेस विल बी फ्री. This place will be free. So you need to move 42 here, 52 here, 62 here, 72 here, and 82 here. And after that, your one element is now less. Total earlier it was n elements. Now it is n minus 1. So you need to remove one element, or you need to update your array list. That earlier it was 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 elements. Now you are having 7 elements in the array. Understood? So algorithm for deletion is same like insertion, only you need to remove first, then you have to move each and every element upward direction. So deletion means removing an element from the existing element of array, and deletion at the end of array, as you know, it is easier. But if you are deleting from the mid or from the beginning, then to move the elements of array one location upward. अंडरस्टूड? तो अपवर्ड आपको सारे एलिमेंट्स मूव करने पड़ेंगे ताकि वो प्लेस जो वेकेंट हुआ है वो हम फिल कर दें, एरे को कॉन्सिक्यूटिव कर दें. अंडरस्टूड? सो दिस इज एल्गोरिथम. ये सारे एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट है. कई बार बोर्ड एग्जाम में दो एल्गोरिथम भी सेम चैप्टर से आ जाते हैं. ठीक है, बाइनरी सर्चिंग का, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन एक तो रहता ही है बाय डिफॉल्ट. एक क्वेश्चन तो इसमें से होता ही है. और एक कई बार मैंने एक पेपर्स में देखा है कि दो एल्गोरिथम्स भी कई बार एग्जाम में होते हैं. दिस इज वेरी स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर. थोड़ा सा सिर्फ ये एल्गोरिथम्स के स्टेप्स यू नीड टू सी. इनको थोड़ा आपको लर्न करना है. you should know the concept. If you know the concept, then it is easy to remember the steps. इसके बाद मुझे ये करना है. Okay, so for deletion, same, you have to first write the algorithm for deletion. Algorithm में what you will write here, that first you have to write about the variables, that LA is the name of your array. It is a linear array having n array elements, and k is the positive integer, or k is the position from where you need to delete the element. Okay, so you have to delete the kth element from the array. तो यहाँ पर from LA assign it to the variable item. तो kth element को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मुझे डिलीट करना है, सपोज आई वांट टू डिलीट दिस, तो फर्स्ट आई विल ट्रांसफर इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड आइटम. दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी, बट जैसे हम कुछ डिलीट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, या कहीं तो हम रीडू करके या रिसाइकल बिन से वी कैन गेट दैट थिंग अगेन. तो यहाँ पर भी फॉर सेफ साइड, द वॉट एवर यू हैव डिलीटेड आई एम स्टोरिंग इन द वेरिएबल आइटम. In future, if you want that deleted thing, then you can get it from this variable. तो मुझे अगर ये 30th एलिमेंट, 30th वैल्यू from third position, that is kth position से delete करना है, तो my first step is to save that value in variable item. After saving this, now what we have to do, we have to, अब तो मैंने ये, मुझे क्या करना है, 30 को मैंने सेव कर दिया यहाँ पे. अब इन पोजीशंस को 40 को इसके ऊपर ओवरराइट करना है, 50 को 40 पे ओवरराइट करना है, 60 को 70 पे ओवरराइट करना है, 70 को 80 पे, और 80 को 70 पे ओवरराइट करना है. तो उसके लिए मेरा काउंटर जो है ऊपर ही जाना है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, इंसर्शन में काउंटर लास्ट से स्टार्ट होता है, और डिलीशन में काउंटर विल स्टार्ट फ्रॉम द kth पोजीशन जहाँ से आपने एलिमेंट डिलीट करना किया, एंड इट विल गो अप टू n-1. आई गिव यू द रीजन व्हाई नॉट n. अगर मैं n करूँगी तो लास्ट लूप जो होगा ये जाएगा, तो ये तो मुझे पता ही नहीं कौन सा प्लेस है, मुझे ये वाला इधर ट्रांसफर करना है ना. तो दिस शुड बी गो अप टू n-1, नॉट n. क्योंकि हम जब ये L of j+1 क्या हुआ, अगर ये L है ये j+1, नेक्स्ट में ये L है ये L है j+1, नेक्स्ट में ये L है ये L है j+1, नेक्स्ट में ये L है ये L है j+1, नेक्स्ट में ये L है और ये L है j+1, राइट. तो नेक्स्ट में ये L है और L है j+1 लेके कोई फायदा नहीं है, तो विल गो अप टू n-1. तो हमारा, अब मैंने जो ये एल्गोरिथम लिया है, that is with the help of for loop. तो for loop में everything is in single line. तो मेरी condition क्या होगी, that I need to initialize counter
at kth position. So j is equals to k. So j is my counter and k is the position. So I'm starting my counter from this kth position and I will go up to n minus 1 क्योंकि लास्ट में ये एल ए ऑफ जे और ये एल ए ऑफ जे प्लस 1 इतना ही करना है. ये एल ए ऑफ जे बनाया तो नेक्स्ट हमें पता ही नहीं कौन सा न्यू एलिमेंट ऊपर चला जाएगा विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एरे. तो इट विल गो अप टू n माइनस 1. तो यही हमारी कंडीशन है. दैट इनिशियल कंडीशन आप इसको वाइल से भी ट्राई कर सकते हो. देखिए सेम जैसे इंसर्शन है यहाँ पे डिलीशन ऊपर एक और स्टेप आ जाएगा j इज इक्वल्स टू k और रिपीट स्टेप 3 एंड 4 क्योंकि काउंटर इंक्रीमेंट का स्टेप भी इसमें आना चाहिए. तो रिपीट j इज इक्वल्स टू k2 n minus 1. तो ये इट विल गो अप टू व्हाट कंडीशन दैट j इज इक्वल्स टू n minus 1. Step we are not writing if it is incremented by 1. तो करना क्या है, प्रोसेसिंग क्या करनी है इसमें कि 40 को 30 पे लाना है. तो अगर ये j है तो 30 क्या है, लीनियर एरे ऑफ j. तो 40 क्या होगा, लीनियर एरे ऑफ j प्लस 1, राइट. तो दिस आई नीड टू मूव हियर. ओके, तो लीनियर एरे ऑफ j प्लस 1 विल ट्रांसफर टू लीनियर एरे ऑफ jth पोजीशन. तो ये एक ओवरराइट हो गया. उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट होगा, राइट. काउंटर इंक्रीमेंट होगा तो ये आपका jth पोजीशन हो जाएगी और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, j प्लस 1. तो ये फिर से चेक करेगा n माइनस 1 तक तो नहीं पहुंचे, नहीं. तो फिर से linear array of j plus 1 will transfer to linear array of jth position. So this will go up to n minus 1 क्योंकि n minus 1 में ये j होगा और ये j plus 1. अंडरस्टूड, क्लियर है आपको? आई थिंक इट इज क्लियर. और लास्ट में फिर आपको क्या करना है, what you need to do, you have to then update your array elements that instead of n elements now you have one less, that is n minus 1. Clear? So I think deletion is also clear. Deletion is also clear. Any doubt in this? What you have to do in deletion? You have to just you have to first remove the deleted item from that place. Means you have to copy, not delete it. You have to copy in the variable item, and after that you have to start counter from kth position to n minus 1 position, and this value you can represent with the help of linear array of jth element. The value of array we can represent with this linear array of jth element, that in this value j plus 1 you need to copy here. So this I am doing with the help of this, that I am assigning this value and moving to in up direction, ऊपर की upward direction में मैं move कर रही हूँ. And it will go up to n minus 1 क्योंकि n minus 1 पे ये j होगा और ये j plus 1. ठीक है, तो this is lead 70 is your LA of J, linear array of jth position. Okay, but after that once it is finished then you need to update your array, that now elements are one less than the existing one. I think it is clear now. Any doubt, or should I move to the next algorithm? छोटे छोटे steps हैं, but if you know the concept कि how we are dealing with that or how insertion and deletion is we are doing, then it is easy to remember those steps. अगर आप उसमें भी देखोगे insertion में तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये वाला पोजीशन नीचे भेज रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पोजीशन हम ऊपर भेज रहे हैं. तो यहाँ पर j linear array of j is going to j plus 1 and here j plus 1 is going to linear array of j. So it is moving towards upward but that was is moving towards downward. Okay, उसमें हम ले step n plus 1 कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट कम कर रहे हैं.
insertion deletion, I think clear to all. Next is bubble sorting. So example of bubble sorting we have already done. Sorting means what? Arranging of data either in ascending or descending order. Okay, arranging your data either in ascending or descending order. So we have many method, bubble sort, selection sort, like that. तो यहाँ पर जो हमारे पास कौन सा मेथड और एल्गोरिथम है हमारे सिलेबस में, दैट इज बबल सॉर्टिंग मेथड. तो बबल सॉर्टिंग मेथड में हम सॉर्टिंग करेंगे either we arrange the data in ascending or descending order. ठीक है, तो ascending में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये एरे एलिमेंट्स हैं. We have already done this in 11th standard. Example, not the algorithm. We have done the example. कि हम एल्गोरिथम 12th में करेंगे, ये करके वहाँ पे हमने नहीं किया था. तो एक वन एग्जाम्पल आप टेकन हियर, दीज आर दी एरे एलिमेंट्स. ओके, 6 4 1 2 5 which is not arranged in either ascending or descending. So we are arranging these array elements in ascending order. तो अभी हमको ascending order में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें देखनी है कि पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें. तो 1 2 3 4 5, तो टोटल n is equals to 5. n is your total number of array elements. Understood? तो टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स कितने हैं, n. तो अब उसमें आपको देखना है कि कितने पास चलेंगे. तो नंबर ऑफ पास जो है, हियर इट इज given wrong, it is n minus 1. The formula is number of iteration, it is typing mistake. Number of iteration और कितने passes हमें चलाने हैं, n minus 1. I'll update in PPT, I'll correct in PPT, but the actual formula is number of array elements minus 1. तो अगर मेरे array elements जो हैं वो 5 हैं, राइट, मेरे array elements अगर 5 हैं तो पासेस कितने होंगे और नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी, 4. ठीक है, 1 2 3 4, राइट. और हर एक इटरेशन में हाउ मेनी कंपैरिजंस वी हैव टू डू, दैट इज n माइनस पास नंबर और n माइनस इटरेशन नंबर. तो फर्स्ट पास में इटरेशन नंबर क्या है, 1. तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन होंगे, फर्स्ट पास में n माइनस कितना, फर्स्ट इटरेशन n माइनस 1 मतलब 4 कंपैरिजन, 1 2 3 4. और जब आप सेकेंड पास में जाओगे, आप ये वाली लिस्ट जो लास्ट इसका जो फाइनल पास 1 में आया है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस. तो इन इटरेशन 2, तो पास नंबर क्या है, 2. तो कितने कंपैरिजंस होंगे इस इटरेशन में, n माइनस पास नंबर यहाँ क्या है, 2. तो n माइनस 2, 3 कंपैरिजन, 1 2 and 3. और थर्ड में 2 कंपैरिजन, n minus 3 मतलब 5 minus 3, you will have to do 2 comparison because pass number is 3. And same way in case of fourth, n minus 4 means 5 minus 4, only 1 comparison you have to do. तो कंपैरिजन करता कैसे है, इसमें सबसे पहले आपको ये वाला जो लिस्ट इट इज गिवन, so you have to start with first array element and second element. बबल सॉर्टिंग में आप जब बुक में देखोगे तो इस तरह से बबल्स सर्कल बनाए होंगे. तो अभी फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट यू नीड टू कंपेयर. तो इफ दैट फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, you need to exchange the position of these two elements. Okay, और अगर ये इससे छोटा है तो you will not do anything in that comparison. So this is first comparison where you are comparing first array element with second array element. If it is greater than that, तो कैसे लिखोगे, इस तरह से आप exchange कर दो इसको, 4 यहाँ और 6. तो न्यू लिस्ट क्या आ जाएगी, 4 6 1 2 5. 1 2 5 सेम है और 4 और 6 हमने एक्सचेंज कर दिए. नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन सेकेंड एरे एलिमेंट एंड थर्ड एरे एलिमेंट. पहले किसमें कंपेयर किया था, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, और अब सेकेंड किसमें कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड में. इफ इट इज ग्रेटर देन दिस,
then what you have to do, you need to exchange. तो 4 पे ही रहेगा और 1 का पोजीशन इधर, 6 यहाँ एक्सचेंज एंड 2 5 विल रिमेन सेम. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड कंपैरिजन. कब तक चलना है आपको? जब तक आप n-1 ये n लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते. उसके बाद थर्ड कंपैरिजन किसके बीच में होगा? थर्ड और फोर्थ एलिमेंट के बीच में. फर्स्ट कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड के बीच में हुआ, सेकंड कंपैरिजन सेकंड और थर्ड कंपैरिजन थर्ड और फोर्थ के बीच में. तो 6 and 2 still it is greater than this, so we will do exchange. exchange आता है ना स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करते हैं ना, जैसे सिंपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लाना है, टू एक्सचेंज टू नंबर. यहाँ पर 2 को पहले एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर 6 को 2 की पोजीशन में लाएंगे और फिर थर्ड वेरिएबल जो 2 था उसको फर्स्ट में ट्रांसफर कर देंगे. मीन्स वी नीड वन एक्स्ट्रा वेरिएबल टू स्वैप these two numbers. In every comparison same variable you can use, क्योंकि हम ये सब लूप में डालने वाले हैं. एंड वी नीड टू लूप नेस्टिंग, टू फॉर लूप और नेस्टिंग लूप लगेगा. जो पहला लूप क्या करेगा? फर्स्ट लूप विल कीप द ट्रैक ऑफ पास नंबर, दैट हाउ मेनी इटरेशन वी हैव टू डू. तो पहला